Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel, Learn Biology with Riya. Today we will try to understand how a biological problem can be solved. In this video lecture, I will discuss some general steps involved in solving a biological problem. But in next video, I will explain the steps by discussing some specific biological problems. How a biological problem can be solved. If you have any biological problem, then first of all you will recognize that problem. After recognition you will make some observations, and then you will formulate hypothesis, and then you will go for deductions, and then you can go for experimentation to check either hypothesis is correct or not. You will go for experimentation, and then you can summarize the results obtained from experimentation, and finally you will publish or report these results in any scientific journal or in any book. First step is recognition of problem. How can you recognize a biological problem? These actually biological problems are the questions related to living organisms. As we are discussing a biological problem, so a question must be related to living organisms. On the basis of that problem, you will make observations. How observations can be made? You can make observations by using your five senses, that is of vision, hearing, smell, taste, and touch. But there are two types of observations, qualitative and quantitative. As their name indicate that qualitative observations are something related to their quantity, which tells us about their quantity, and a qualitative uh, uh, observations gives us information about quality. We will discuss some examples of qualitative observations and quantitative observations. Here are the best examples of qualitative observations. The freezing point of water is colder than the boiling point. It actually tells us about the quality. A liter of water is heavier than a liter of ethanol. And quantitative observations, the examples of quantitative observations are the freezing point of water 0 degrees Celsius and the boiling point is 100 degrees Celsius. Here it tells us about boiling point and freezing point. These values are mentioned in quantity, just like 100 degrees Celsius, 0 degrees Celsius. A liter of water weighs 1000 grams and liter of ethanol weighs 789 grams. It also tells us about quantity. And then formulation of hypothesis. What is hypothesis? Hypothesis can be defined as tentative explanations of observation. Explanation of observations is called hypothesis. ये हाइपोथेसिस एक्चुअली अगर सपोज़ हमारे पास हाइपोथेसिस का अगर हम कोई एग्ज़ाम्पल ले लें तो इन केस ऑफ कोविड-19 हम ये कहते हैं कि जो सीवियर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन है इज़ कॉज्ड बाय कोविड-19. हम अगर सपोज़ हाइपोथेसिस डेवलप करना चाहते हैं रिलेटेड टू कोविड-19, तो हम इस तरह का हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं कि जो सिवियर रिस्पायरेटरी जो इन्फेक्शन है, सिवियर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन इज़ कॉज्ड बाय कोरोना वायरस. दिस इज़ आवर हाइपोथेसिस. तो अब इसके कैरेक्टर्स को हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट है कि हाइपोथेसिस मस्ट बी वेरी सिंपल एज पॉसिबल, एज सिंपल एज पॉसिबल. तो एक ही सेंटेंस में आप किसी भी हाइपोथेसिस को आप एक्सप्लेन करते हैं तो
ये हमारा जो हाइपोथेसिस है ये भी बिल्कुल सिंपल है। जनरल स्टेटमेंट, इट शुड बी जनरल स्टेटमेंट। जनरल स्टेटमेंट होनी चाहिए, टेस्टेबल होनी चाहिए। यस, वी कैन टेस्ट दिस हाइपोथेसिस, कि हम टेस्ट कर सकते हैं कि जो सीवियर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन है दैट इज़ कॉज्ड बाय कोविड-19, इसके लिए हम टेस्ट कर सकते हैं। एंड पोटेंशियली फॉल्जेबल, कि ये लाजमी नहीं है कि जो सीवियर रिस्पायरेटरी जो इन्फेक्शन है वो कोविड-19 ही कॉज करता हो, ये कोई और वायरस भी कॉज कर सकता है। तो इसके अंदर फॉल्जेबिलिटी होनी चाहिए, और इट मस्ट बी टेंटेटिव आइडिया, इट एग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशंस। तो ये डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हाइपोथेसिस के जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। Then deductions. Deductions are actually drawn from hypothesis. Hypothesis के basis पे आप deductions आप draw करते हैं. Deductions actually होते क्या है? These are expected results of hypothesis. Hypothesis के जो expected results जो हम निकालते हैं उसको हम deduction कहते हैं. And actually we use if and then logic. यहाँ पे हम इफ़ एंड देन का लॉजिक हम यूज़ करते हैं कि अभी जो हमने हाइपोथेसिस हमने जो डेवलप किया है कोविड-19 के हवाले से, तो हम इसमें हम यही कहेंगे कि इफ़ सिवियर रिस्पायरेटरी infection is caused by COVID-19, then all patients having severe respiratory infection must have COVID-19 और कोरोना वायरस इन देयर ब्लड सैंपल। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि अगर हम ये कहते हैं कि जो सिवियर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन है दैट इज़ कॉज्ड बाय कोविड-19, ये हमारा हाइपोथेसिस है। तो अगर सिवियर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन कोविड-19 की वजह से कॉज हो रही है, तो ऐसे पेशेंट्स जिनके अंदर या जो कि सीवियर इन्फेक्शन रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन जिनका है, उन सब के ब्लड में कोविड-19 का होना लाजमी है। तो हमारा डिडक्शन इस टाइप का होगा कि इफ़ ऐसा हो तो फिर देन के बेसिस पे जो है ये लॉजिक बनती है। देन टू टेस्ट दिस हाइपोथेसिस वी विल गो फॉर एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू ही हमें पता चलेगा कि हमारा जो हाइपोथेसिस है वो ठीक है या गलत है। एक्सपेरिमेंटेशन हम कर सकते हैं, येस। कोविड का जो एग्जांपल है उस केस में हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम चेक करेंगे, ब्लड सैंपल्स ले लेंगे, ब्लड सैंपल्स लेके उनका जो ब्लड है उसके अंदर कोरोना की प्रेजेंस या एब्सेंस को हम चेक कर सकते हैं। टू चेक इफ हाइपोथेसिस इज ट्रू और नॉट, हाइपोथेसिस इज चेक बाय रिगरस टेस्टिंग। टेस्टिंग के थ्रू हम हाइपोथेसिस को चेक कर सकते हैं। करेक्ट हाइपोथेसिस अगर होगी हमारी तो दैट विल बी एक्सेप्टेड, वो एक्सेप्ट हो जाएगा अगर हमारा जो हाइपोथेसिस है वो सही साबित हो जाता है कि जितने भी जो पेशेंट्स थे जिनके अंदर सिवियर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन मौजूद था, तो उन सब के ब्लड में अगर कोविड-19 या कोरोना वायरस मौजूद है तो दैट मीन्स कि हमारा जो हाइपोथेसिस है दैट इज़ एक्सेप्टेड। एंड देन वी विल समराइज द रिजल्ट्स। जो भी रिजल्ट्स आएंगे हमारे पास वो सारे जो है वो उनको समराइज़ करना होगा। किस तरह से समराइज़ करेंगे कि आपके पास जो पेशेंट्स थे उन पेशेंट्स की आप ग्रुप्स बनाएंगे कि एज 18 से 30 तक इतने पेशेंट्स हैं, 30 से 60 तक इतने पेशेंट्स हैं, अबव 60 इतने पेशेंट्स हैं। तो बाय यूजिंग फार्मूलाज आप एवरेज वगैरह निकाल सकते हैं और उसके बाद जो है आप स्टैटिस्टिकल उसकी एनालिसिस आप कर सकते हैं। उन जो रिजल्ट्स हैं उनको आप मज़ीद डिटेल में जो है वो एनालाइज कर सकते हैं कि इतने से इतने एज ग्रुप के अंदर जो है वो रिस्पिरेशन रेट इतना है या फिर उनके अंदर जो है सिवियरिटी इतनी है, वो सारी चीज़ें आप डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हो। If after that you will report the results, you can publish your results in any scientific publication or in any book
Publishing of result is an essential part of scientific method, which is a very important part of scientific method. After that, then other people, it allows other people to verify your results. दूसरे लोग भी इसको verify करना चाहते हैं, दूसरे scientists भी इसको एक दफ़ा verify करेंगे आपके results को, and after that that will be accepted, and they will use this knowledge to solve other problems, other biological problems as well. Thank you so much.